Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome to English grade 9 and I welcome you to Chase Academy. Students, today we are going to cover the remaining SLO of the writing competency and the last SLO of this chapter, chapter number 6. Now, in the last lecture we talked about formal letter writing और आपको कुछ टास्क दिए गए थे करने के लिए, दो प्रॉम्प्ट्स थे. फॉर्मल लेटर था and you have to, I asked you to write those letters. So I hope आपने कर लिया है. अगर नहीं, then it's time to complete the task and we can assess that later. Now students, another SLO of writing that we have over here is about hyphens. This is about using the punctuation hyphen. So the SLO says use hyphens, hyphenated nouns and adjectives in words, letter string, OUGH words. Now, when we are using hyphens, we are combining two words. We can combine and make two nouns together to act as one word, and we call it hyphenated nouns, or we combine adjectives and we call them hyphenated adjectives. So, and now students, OUGH letter string, ये जो पैटर्न है OUGH, इससे बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में बनते हैं, जैसे टफ, कॉफ, रफ, इनफ, ऑल दैट. नाउ हाइफन्स को हम देखेंगे कि किस तरह इन OUGH लेटर स्ट्रिंग वर्ड्स में भी हाइफन इस्तेमाल होता है. जैसे टफ इनफ, इन दोनों वर्ड्स के दरमियान हाइफन है. Beta, please mute yourself. It's a little bit distracting. All right, thank you. So, OUGH words, nouns and adjectives. इनमें hyphen यानी जो वो small dash है, वैसे हम उसे hyphen कहते हैं. It is different than a dash. एक होती है dash, long dash, M dash, N dash उसे कहा जाता है. But this is hyphen and हम इसको वर्ड्स के दरमियान में, नॉट लाइक नॉट हियर, नॉट एट द अपर साइड, बट इन द मिडल हम यूज करते हैं. सो ये हमारा आज का SLO है. इट्स वेरी इजी, इट विल बी ओवर बिफोर यू नो इट. सो व्हाट इज अ हाइफन एंड गिव सम एग्जांपल्स. लेट्स सी व्हाट डू यू नो अबाउट हाइफन. यस, वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए और उनको एक बनाने के लिए हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं. इट्स अ वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन क्यू या पंक्चुएशन एड वी कॉल इट. नाउ कैन वी गिव सम एग्जांपल्स ऑफ यूजिंग हाइफन्स? सॉरी, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा. यस, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ. यस, इस तरह के जो सारे रिलेशनशिप्स हैं, इनके जो नाम हैं, दे आर कनेक्टेड विद हाइफन्स. एंड इसमें एक से ज्यादा हाइफन का इस्तेमाल हो रहा है. फादर हाइफन इन हाइफन लॉ. दो नाउन्स हैं हमारे पास और उसके दरमियान में क्या है? प्रेपोजिशन इन. सो दो नाउन्स, प्रेपोजिशन, तो मोस्टली क्या होगा? दो हाइफन्स यूज होंगे. अगर तीन वर्ड्स हैं तो दो हाइफन्स का इस्तेमाल होगा. दो वर्ड्स हैं तो हम सिर्फ एक हाइफन को इस्तेमाल करेंगे. एंड दैट्स हाउ वी यूज आवर हाइफन. सो इफ आई से इट्स अ वेरी वेल रिटन लेटर, a well written letter, well written, adjectives. Okay, so this makes a compound adjective. Well thought, it's a well thought idea, it's a well thought plan. So well और thought के दरमियान में hyphen लगेगी and it makes a adjective. Well thought मतलब अच्छा सोचा हुआ idea, and we know this is the quality of that idea, hence it is an adjective. All right, we have seen some examples. So we use hyphens or hyphen to join word and word parts
to create new words within new meanings. Now the new words, the newly created words are already established, and अगर आप adjective elaborate करना चाहते हैं, then you can be creative and use hyphens to make it sound like one word. When two or more words are joined with a hyphen, it is called a compound word. So let's say well thought, well hyphen thought. It's a compound word. Compound क्यों? क्योंकि दो से मिलके बना है, ग्रुप है, it's a pair. So that's why we call it a compound word. Now it can be a compound noun, compound adjective, etc. Compound words that are commonly hyphenated include compound nouns and compound numbers. 24, 357, इसमें hyphen का इस्तेमाल होगा? Yes. और when we write in English letters को जब हम use करके, words को use करके जब numbers को present करते हैं, represent करते हैं, then we use hyphens. So उसका एक और भी usage है. And it can also have compound adjectives. दो adjectives को मिला के अगर हम किसी चीज को describe कर रहे हैं, उसकी quality को, then we can combine two adjectives together, जैसे well thought. All right, we say tough enough, or there are so many words जो adjectives के तौर पे जो adjectives दो combine होंगे, then it will be an compound adjective. We will see some examples. All right, let's see. There are different scenarios where we will use hyphens in compound words. Now students, do you know why we are learning hyphens? Because it's a very important punctuation mark. Meaning को clear करने के लिए और अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए written form में अगर आप यूज नहीं करेंगे hyphens, then it will be confusing. All right? So if one sentence has two words and they are containing, one of them is a compound noun, दो nouns बन के वो एक noun बनता है, लेकिन अगर आपने उसमें hyphen include नहीं किया, then it will be confusing कि ये दो nouns हैं, अब इसको हम दो nouns की तरह treat करेंगे या one single noun compound noun की तरह treat करेंगे. Confusion? Yes? So in order to avoid this confusion, we use hyphens. हम बताते हैं रीडर को कि ये दो लफ्ज जो हैं linked हैं, इनको इकट्ठा समझना है, इकट्ठा पढ़ना है और एक कंसिडर करना है, इसलिए हम hyphens का इस्तेमाल करेंगे. Very clear? क्या पर्पस है hyphen इस्तेमाल करने का? Now, unit of measurement plus noun. For example, when we are measuring something in liters, in kilometers, etc., let's say 6 inch. अब दो वर्ड्स हैं, एक साथ तो नहीं लिख सकते, स्पेस देना जरूरी है, because these are two individual words. But we are talking about something that is in the length of 6 inch. It means that these words are going together. We are using hyphen over here in the middle. Not a very long dash, but just a small hyphen. So 6 inch, it tells us the measurement. 10 gallon, 3 year. क्या formula है? Unit of measurement. Alright? Plus your noun. Unit of measurement क्या है? वो सारे numbers. 5 pounds, 10 inches, 3 kilometers, इस तरह. Now, so unit of measurement plus your noun. Year is a noun, gallon is a noun, inch is a noun. Alright? So measurement plus noun. यहाँ पे इस situation में we will use hyphen. Clear? Now, हमने अभी बात की थी, a student told a very good example. Noun plus preposition plus noun. Daughter, noun, in, preposition है, in, out, outside, inside. तो in क्या है? Preposition. Law is noun. Editor in chief, noun. Preposition, noun. Commander in chief. तो
अब देखें दो हाइफन्स का इस्तेमाल हुआ है, 3 वर्ड्स हैं, दोनों को तीनों को हमने लिंक करना है, एक वर्ड है. When we are talking about editor in chief, I am referring to one person. All right? So it means that these 3 words will act as, it will refer to one person. So that's why we use hyphens. Now, let's see how hyphens are used in compound adjectives. When 2 or more adjectives modify or describe something about a noun, then we combine those adjectives and make it a compound adjective. For example, a well-known author. Well-known का क्या मतलब है? जाना पहचाना, जो काफी मारूफ है, मशहूर है, well-known है, सब उसे जानते हैं. So, किसकी ये क्वालिटी है? हमारे नाउन की, राइट? ऑथर इज अ नाउन. तो वो वर्ड जो नाउन की क्वालिटी को बताता है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव. सो वेल नोन इज एन एडजेक्टिव एंड इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स एंड वी कॉल इट अ कंपाउंड एडजेक्टिव. 2 वर्ड्स हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव. ऑलराइट. Next scenario or situation is when numbers and nouns are used together. For example, a 10-page document. एक document है 10 pages का. Simple. A 10-page document. Number भी आ गया, noun भी आ गया. So 10-page document. So we will use hyphen. All right. When time expressions act as adjectives, we will use hyphens. For example, a 2-hour movie, a 5-hour shift, a 3-hour class, 3 hours class. So class कितने की है? कितने hours की है? 3 hours की, for example. So 3 hours. It means this is acting as one unit. So we will use hyphen. So कितनी examples हो गई? Unit of measurement plus noun. Noun plus preposition plus noun. Then we have adjectives, compound adjectives, and then numbers and nouns when they are used together. And lastly, over here, when time expressions act as adjectives. 2 hour adjective है, किसको describe कर रहा है, किसको modify कर रहा है? Noun को, which is a movie. So this is acting as an adjective. Next up, alright students, आपको समझ आ रहा है यहां तक? Yes, students on the Zoom class, is everything clear? Please speak up. You can unmute yourself and give your feedback. Yes, sir. Alright. When next up we have when adjectives are used to form a single idea. For example, a good-looking car. Which one is our noun? Car. And good looking is the quality of the car. It's an adjective. So good looking, this is an example of an adjective. It is conveying an idea that how the car is like. When fractions are used as adjectives. Fractions, आपको पता है? We use this dash over here, fractions इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अगर हम इसे इंग्लिश में वर्ड्स के थ्रू इस्तेमाल करेंगे, then we need to add hyphen. Alright? For example, half-eaten sandwich. वो तो इस तरह भी होता है, 1/2. तो 1/2 को जब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे इस तरह नंबर्स, लेटर्स के जरिए, वर्ड्स के जरिए, half-eaten. So we will use hyphen. Now 3/4, 1/3, इसके साथ भी दरमियान में क्या आएगा? Hyphen. Alright, very good. Then we have compound adjectives when they come before a noun, and then we add hyphen over here. A fast-paced thriller. Thriller, it's a kind of a film, so it's a noun. So जब compound adjectives आपके noun से पहले आएंगे, definitely it will have a hyphen. Next up, when noun phrases act as adjective.
वो फ्रेज जिसमें नाउन पार्ट ऑफ स्पीच आता है उसको हम क्या कहते हैं? नाउन फ्रेज. And when noun phrase, when they are acting as adjectives, then we use hyphen. For example, a city-wide celebration. Which one is our noun? Over here, city and city-wide celebration. This is a noun phrase, but this is acting as an adjective. क्योंकि ये quality describe कर रहा है about what? Celebration, which is a noun. So that's when we will use our hyphen over here. Next up, to separate parts of compound numbers like 23,000 bottles, 55, इसमें भी hyphen का इस्तेमाल होता है. 399, इसमें भी hyphen का इस्तेमाल होगा. So for such compound numbers, जब दो नंबर्स होते हैं, 1 के साथ तो हाइफन नहीं आएगा, 3 के साथ हाइफन आ सकता है? नो, बट 490 you will add your hyphen in that. Simple. All right, let's put that knowledge into practice now. Yes. G student, it's yes. Please explain compound adjectives once again. आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. Sir, please again explain compound adjectives. कंपाउंड एडजेक्टिव्स को एक्सप्लेन करूं दोबारा? Yes, sir. जी, देखें यहां से हमने पढ़ना शुरू किया था. When two or more adjectives modify a noun, we use hyphen in compound adjective. अब देखें, what is all the colors? They are adjectives. Green, blue describe करते हैं क्वालिटी को. जैसे a very short pointer. short क्या है? Pointer. Adjective. Alright. लेकिन अगर मैंने मजीद इंफॉर्मेशन देनी हो, short built pointer, तो short built क्या है? Compound adjective. Alright. Built, it's a quality. Short is a quality. And what are we referring to? The pointer. Alright, the pen. So, a short built pen or car. So, दोनों adjectives आ गए. अब दोनों adjectives को combine करेंगे using hyphen. We will link them using hyphen. तो short built एक adjective consider किया जाएगा, and that is compound adjective. यहां पे आप एग्जाम्पल देखें. वेल नोन भी एडजेक्टिव है, वेल भी एडजेक्टिव है. ऑलराइट, वेल नोन ऑथर, दोनों एडजेक्टिव्स किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? नाउन को. जब दो एडजेक्टिव्स आएंगे तो हम हाइफन को इस्तेमाल करेंगे. क्लियर है? Yes, sir. यस, वेरी सिंपल. दो नाउन्स को लें, हाइफन ऐड करें, कंपाउंड नाउन हो जाएगा. If you take two adjectives that are describing one noun or they are modifying one noun, so that वो जो दो adjectives हैं वो क्या कहलाएंगे? Compound adjectives. Alright. So let's find out. She visited her mother-in-law on the weekend. Yes. Compound nouns. Which one is it? Mother-in-law. और ये क्या है? क्या ये कंपाउंड एडजेक्टिव है? नो, कंपाउंड नाउन. मदर भी नाउन है, लॉ भी नाउन है, एंड पी इज एंड इन इज प्रेपोजिशन. ऑलराइट, माय सिस्टर इन लॉ, ये भी वैसे ही है. द एडिटर इन चीफ. ऑलराइट, वी एंजॉयड होम कुक्ड मीट एट द लिटिल inn. Yes. Now this is a challenge, but an easy one, not a very difficult one. जी, किसकी बात हो रही है? मीट की. मीट नाउन है. मीट की क्वालिटी क्या है? क्या वो बाहर से बना है या घर से बना है? किस तरह है? होम कुक्ड है ना. सो होम कुक्ड. ऑलराइट, यहां पे भी लगा सकते हैं आप.
होम कुक्ड मीट या होम कुक्ड मीट, दोनों को ऐसे कर सकते हैं. तो होम कुक्ड घर का बना हुआ, ये एक एडजेक्टिव है. एंड व्हाट इज इट डिस्क्राइबिंग? आवर नाउन. द होटल्स चेक इन प्रोसेस वाज क्विक एंड एफिशिएंट. हाइफन कहां पे पुट करेंगे? चेक इन प्रोसेस. जी, चेक इन. प्रोसेस. Yes. Check-in process was quick and efficient. Next up, she was the runner-up in the race competition. Runner-up में? Yes, sir. Yes. Yes, एक sir. runner-up. All right. So this is a compound word. He received a warm-hearted welcome from his new neighbors. It's already put over there. Warm-hearted. किस तरह का welcome मिला? Warm-hearted. So it's a compound adjective. The president serves as the commander-in-chief of the military. Yes. Commander-in-chief. She collaborated with her co-workers on the project. Very good. The temperature dropped to minus 37 degrees Celsius. 37. Alright. So this is how we used compound noun, hyphens in compound nouns. Read the given sentences and identify compound adjectives which need to be hyphenated and write them in your notebook. The 2-year-old child giggled happily. Noun क्या है सबसे पहले? Child. और ये describe कर रहा है the 2-year-old. The old-fashioned dress caught everyone's attention. Dress is the noun. किस तरह का ड्रेस है? Old fashioned. And वो वर्ड जो हमारे ड्रेस को या नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, that is adjective. So simply old fashioned. Old भी adjective है, fashion भी, fashioned भी adjective है. She is a self-confident and good leader. Self-confident. क्या good leader में आ सकता है? No. The ill-tempered cat hissed at anyone who came too close. Ill-tempered. Again, ill adjective है, temper भी, temperament, temper भी एक adjective है. Cat is the noun over here. She bought a second-hand bicycle to save money. Yes, student. The easy-to-read font makes the book accessible to all ages. Easy to read. Yes, easy to read. क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? Noun की, which is a font. And font is easy to read, and that's the quality, and hence it makes it a noun, preposition, adjective, preposition and noun. तो ये भी combination है. Alright? The well-behaved children quietly listened to their teacher. Well-behaved. Both are adjectives. दोनों adjective है, then it is a compound adjective. Now let's talk about OUGH letter string. ये जो pattern है OUGH student, इसके साथ भी first of all of these, most of these OUGH words are pronounced differently. Cough is pronounced differently. Tough enough, tough enough की दोनों की sound एक जैसी है, लेकिन cough की sound थोड़ी different है. डो, जो आटे से जो उसको आटे को गूंथते हैं, डो बनाते हैं, उसमें भी OUGH है, बट इट इज नॉट डफ, इट इज डो, राइट? सो कहीं पे F की आवाज है, कहीं पे लेटर स्ट्रिंग OUGH पे F की आवाज नहीं है. टफ में है, यस, बट डो में है, नो. थ्रू OUGH, नो. Alright, so we have these different OUGH letter string pronunciations. अब
A rough-coated, dough-faced, thoughtful plowman strode through the streets of Scarborough. After falling into a slough, he coughed and hiccuped. Now, अब देखें कि even in the OUGH letter string we use hyphens. A rough-coated क्या है? Compound noun, right? Compound noun है या compound adjective? Adjective, very good. Dough-faced, ये भी. Thoughtful plowman strode through the streets. Now, here another word is added, is pass through. यहां पे भी OUGH letter string है and we can use our hyphen over here. Alright? So यहां rough में देखें क्या sound आ रहा है? Rough, dough, plowman, through, यहां पे different sound है. So ये है OUGH letter string. They are written differently, pronounced differently. Though this is OUGH letter string, but their pronunciations are different. THROW is throw, but THROUGH is through, not through or through, क्योंकि यहाँ पे sound different आएगा. And this is how you deal with OUGH letter string. Here is your worksheet. यहाँ पे आप क्या करेंगे? Hyphens को इस्तेमाल करेंगे to complete the worksheet according to the instructions over here. Red-handed. The burglar was caught red-handed. So obviously red-handed में hyphen आएगा. बिल्कुल ये worksheet आप solve करेंगे and I'll add a skill sheet also. There's a presentation that we have just visited, we have just gone through. This is all about today's lecture, dear students. I hope कि SLO clear हो जाएगा. हो चुका होगा, practice करें. I'll see you in the next video lesson. If you have any kind of question, you can ask me. Take care of yourselves. Allah Hafiz.